सो वेलकम स्टूडेंट्स। सो यहाँ एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है। सो इसमें गिवन इंफॉर्मेशन इज जॉन एंड एंजेलिना आर वाइफ एंड हस्बैंड्स। सो जॉन जो है अपने फर्स्ट वाइफ के साथ, जॉन एंड हिज फर्स्ट वाइफ हैज एक्स चिल्ड्रन एंड एंजेलिना एंड हर फर्स्ट हस्बैंड हैज x+1 चिल्ड्रन एंड जॉन एंड एंजेलिना टुगेदर हैव सम नंबर ऑफ चिल्ड्रन विच इज नॉट गिवन, बट इंफॉर्मेशन दिया है कि द होल फैमिली हैज 24 चिल्ड्रन। द होल फैमिली हैज 24 चिल्ड्रन एंड you're asked to find the maximum number of fights that can take place if it is given that children of same parents do not fight। इसका मतलब ये वाला x चिल्ड्रन आपस में फाइट नहीं करेगा, x+1 चिल्ड्रन they are not fighting among themselves, but these two can fight, and these children, which for now I don't know the number, these children don't fight among each other, but आपस में लड़ाई हो सकते हैं। So the question is, if the total number of children is 24 in the whole family, what's the maximum number of fights that can take place? ठीक है? So now let us try to analyze this question. So first, let us try to find the number of children that John and Angelina has. So total number of children जो है x है यहाँ प्लस x+1, यहाँ x+1 प्लस इस नंबर ऑफ चिल्ड्रन को मैं n मानता हूं फॉर नाउ। सो लेट जॉन एंड एंजेलिना हैज n चिल्ड्रन, सो दिस टोटली शुड बिकम 24, दैट्स व्हाट इज गिवन। सो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉर जॉन एंड एंजेलिना इज इक्वल टू 24 माइनस 2x माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 23 माइनस 2x। So this is the number of children that John and Angelina has. ठीक है? So अब what are the number of fights? Number of fights is equal to what? So यहाँ देख लीजिए x children आपस में लड़ने रहे, ठीक है? So these x children can fight with this x+1 children or this children. ठीक है? First let us try to calculate the fights between this and this. So if you have, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेता हूं, if there are two children here and there are 3 children here, so आपस में कितना फाइट्स हो सकते हैं? देखिए, this guy can fight with this or this 3 ways, and this guy can fight with this and this. So total कितना फाइट्स हो रहे हैं? 6 फाइट्स हो रहे हैं। अगर वही 3 है तो you can have 9 fights. So if you have x children here and y children here, the number of fights will be x into y. ठीक है? total number of fights. So the total number of fights here is, ये दोनों का fights count किया तो x into 23 minus 2x plus इसका fights calculate किया तो you get x into x+1 plus ये दोनों का children का fights count किया तो 23 minus 2x into x+1. So these are the total number of fights that can happen, which is a function of x. ठीक है? That is equal to 23x minus 2x square plus x square plus x plus 23x minus 2x square plus 23 minus 2x. So that is equal to, देखिए, so minus 2x square plus x square आपको minus 3x square आ रहे हैं। इसके बाद 23x plus 23x 46x plus x 47x minus 2x, so plus 45x, ये कंसिडर हुआ, ये कंसिडर हुआ, ये कंसिडर हुआ, ये कंसिडर हुआ। इसके बाद the constant term is 23. So these are the total number of fights as a function of x. So let us take this as a function of x. So for maximum number of fights क्या होना चाहिए? f dash of x has to be equal to 0. So f dash of x is equal to 0 होना चाहिए. This implies minus 6x plus 45 has to be equal to 0. This implies x has to be equal to 45 by 6. That is equal to, अगर 3 टेबल से डिवाइड किया तो 15 by 2 7.5. So when x is equal to 7.5, mathematically
this function has the minimum value. But physically x is the number of children, so वो तो 7.5 नहीं हो सकते. So आप क्या करना पड़ेगा, एक बार 7 पे चेक करिए टोटल नंबर ऑफ फाइट्स, एक बार 8 पे चेक कर लीजिए. So जिसमें मैक्सिमम आएगा that will be the answer. So number of fights when x is equal to 7. So f of 7 is equal to, so minus 3 into 49, 7 square, plus 45 into 7 plus 23. That is equal to, देख लीजिए. So इसमें 7 कॉमन लिया तो 7 into 45 minus 21 plus 23. 45 minus 21 is 24. 24 into 7. 24 into 7. So 140 plus 28. 168 plus 23. 191. So अगर x is equal to 7 है तो you have a total of 191 fights. So what is f of 8? अगर x 8 है तो if the number of x is 8, then the number of fights is, so minus 3 into 64, minus 3 into 64 plus 45 into 8 plus 23. So ये भी calculate करके देख लीजिए. So you get something like 8 common लिया तो if you take 8 as common you have, so 45 minus 24 plus 23, so that is equal to, so you have 21 into 8. So exactly same number आ रहा है, यहाँ से भी 191 आ रहे हैं. So x is equal to, if x is 7 or x is 8, you have a total number of 191 fights, and that is the maximum number of fights that can happen. Okay, so the answer is 191. Thank you.